अच्छे डिबेट होगा, स्ट्रक्चर डिबेट होगा, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगा और जो कुछ भी वो चाहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार तो ही हैं। और लेकिन खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली नीलामी शुरू की। सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करें। 8 राज्यों में पहले 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली किस्त ई नीलामी केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा 29 नवंबर 2023 को यहां से शुरू की गई थी। पहली किस्त में कुल 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी, जिनमें से 16 खनिज ब्लॉकों को कंपोजिट लाइसेंस देने के लिए और 4 खनिज ब्लॉकों को खनन पट्टा देने के लिए रखा गया है। नीलामी प्रक्रिया की शुरू करते हुए मंत्री ने कहा कि लिथियम वास्तव में भविष्य का खनिज है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक होता है और महत्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी में 2 लिथियम ब्लॉक की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि एक बार चालू होने के बाद वे आयात में कटौती करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि वर्तमान लॉन्च का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को सुनिश्चित करना और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना और रणनीतिक क्षेत्रों का और विकास करना है। लिथियम वास्तव में भविष्य का खनिज है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हो रहा है। ये जानकर खुशी हुई कि आज महत्वपूर्ण खनिज नीलामी की शुरुआत में 2 लिथियम ब्लॉक की पेशकश की गई है। एक बार चालू होने पर वे आयात में कटौती करने और निर्माण करने में मदद करेंगे। 29 नवंबर 2023 नीलामी श्री वी.एल. की उपस्थिति में शुरू की गई। कांधा राव सचिव खान मंत्रालय श्री अभय ठाकुर, G20 में भारत के सॉस शेरपा, भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन, भारत में अर्जेंटीना के राजदूत श्री हुगो, जेवियर गोब्बी, श्री सेप्पो नुर्मी, मिनिस्टर काउंसलर, प्रतिनिधिमंडल के उप प्रमुख, भारत में यूरोपीय संघ के दूतावास, अमेरिकी दूतावासों के ऊर्जा मामलों में प्रमुख श्री डेमन डबार्ड, श्री कैलोरीना सेटो, STI ब्राजील की प्रमुख श्री सेबेल घोष, व्यापार आयुक्त कनाडा का दूतावास एरिना कोसेक, जलवायु परिवर्तन नीति प्रमुख यूनाइटेड किंगडम श्री किंग इलुंग, मंत्री कोरिया गणराज्य के दूतावास सुश्री मेरी वर्लिक, उप कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, एशियाई विकास बैंक, भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन, भारतीय खनिज उद्योग महासंघ आदि के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, खान विदेश मंत्रालय, बिजली और नई नवीनीकरणीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इस्पात, वाणिज्य और उद्योग और भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी, विभिन्न सरकारी संगठनों और सार्वजनिक उपकरणों के गणमान्य व्यक्ति, उद्योग के दिग्गज, संभावित बोली लगाने वाले और अग्रणी मीडिया घराने। निविदा दस्तावेजों की बिक्री की शुरुआत 29 नवंबर 2023 से शुरू हो गई है। संभावित बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व सम्मेलन 22 दिसंबर 2023 को निर्धारित है। निविदा दस्तावेज की बिक्री की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2024 है। इसके बाद पसंदीदा के चयन के लिए ई नीलामी शुरू होगी। बोली लगाने वाला पूरी नीलामी प्रक्रिया नीलामी शुरू होने की तारीख से 103 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। खानों का विवरण, नीलामी की शर्तें, समय सीमा आदि। SSTS नीलामी मंच www.mstccommerce.com, ऑक्शन home/mlcl/index.jsp पर देखा जा सकता है। नीलामी पारदर्शी 2 चरणों वाली आरोही नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। पात्र बोलीदाता का चयन उसके द्वारा खनिज के मूल्य के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की पहली किस्त के शुभारंभ के बाद प्रेस वार्ता में भाग लिया। ये बताते हुए खुशी हो रही कि नीलामी में लिथियम सहित सभी खनिजों की अनुमानित कीमत लगभग 45,000 करोड़ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और एमईसीएल क्रमशः लेन-देन सलाहकार और तकनीकी सलाहकार के रूप में नीलामी प्रक्रिया के संचालन में खान मंत्रालय की सहायता कर रहे हैं। सरकार चरणबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को अधिक ब्लॉकों की नीलामी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री एंड प्रहलाद जोशी ने आज भारत में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहली नीलामी शुरू की। 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी, जिनमें से 16 खनिज ब्लॉकों को कंपोजिट लाइसेंस देने के लिए 4 खनिज ब्लॉकों को कानून अनुदान करने के लिए रखा गया है। डिटेल्स ऑफ ब्लॉक्स पुट अप फॉर ऑक्शन। मिनरल्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स स्टेट ग्लाइकोनाइट 3 बिहार उत्तर प्रदेश, ग्रेफाइट 3 ओडिशा एंड तमिलनाडु, ग्राफिक एंड मैंगनीज 2 ओडिशा, लिथियम एंड री 1 छत्तीसगढ़, लिथियम री एंड बॉक्साइट एल्यूमिनियम लेटराइट जम्मू 1 जम्मू एंड कश्मीर, मोलिड डेनम 5 तमिलनाडु, निकल एंड क्रोमियम 1 गुजरात, निकल एंड कॉपर 1 उड़ीसा, निकल क्लोरियम एनपीजीई 1 बिहार, फास्फोराइट 1 उत्तर प्रदेश, पोटास 1 झारखंड।
Minister of Mines, Coal and Parliamentary Shri Pralhad Joshi to address this press meet after the G20 outreach program and launching of the auction of first tranche of auction of critical minerals. Now I request Honorable Minister to make opening remarks, then we can have interaction. Thank you. Welcome to all friends. For the first time, today we have launched the auction of the critical minerals. And 20 blocks we have auctioned. All put together, 20 blocks. All minerals worth is around 45,000 crores. This is what is estimated. About 45,000 crores. So that, as you already know, lithium blocks are also there. And I would also like to emphasize, we had always focused on major minerals and superficial minerals. For the first time, critical and deep-seated minerals we have identified, and exploration is also at the various level it is done. Not only identified, we have successfully auctioned, put it for the auction also from today. And before to this, means before Modi government, not even it was identified which are critical minerals. It will be different for the different countries. Which are critical to our country, that was also not identified or it was listed. Under the guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi, first we identified. Criteria to identify the critical is, one is economic and the strategic importance. And second one is supply risk and its availability in the country. So far, we have identified around 100 blocks. Out of that, 20 blocks we have put for the auction. Out of that, 16 is for composite license, 4 for mining auctions. As you all know, lithium and cobalt has become most critical in these days because of the storage of energy. As on date, around 24,000 crore is the import bill of the lithium. So considering all these things, we have brought in a lot of changes in the MMDR Act, which you are all aware. I have given a lengthy speech in the Parliament. And GSI, MECL, they were doing only superficial minerals like iron ore, bauxite, or other superficial minerals. And we have given thrust and we have instructed them also. All superficial minerals you can give at the G4 level, report can be given at the G4 level, and we will go for the auction for the superficial mineral at the composite license at the G4 level, and you can concentrate and you can focus on
deep-seated and critical minerals. पेट ही पतला होगा कुछ नहीं. And it is not one day we just identified 24 minerals and brought some amendment. It is not like that. Brainstorming was going on in the department for quite some time. At least I can say more than a year and a half. Lot of discussion went on. Stakeholders were consulted and also various other departments, states were consulted. Then we came out with a list and after identifying these 24 minerals plus 6 minerals which have been withdrawn from the atomic minerals, but since we do not, so far we have not found any resources of those minerals, we are telling 24, otherwise the total list is 30. And because of this change in approach, policy of Modi-led government, from last more than one and a half year, little more than 1.5 years, JSI MECL have started focusing on the critical and deep-seated mineral. That's why increase in the geological report of the deep-seated mineral and the critical mineral has increased almost 111%. And it's also, and at the same time, we have also brought in amendment for the exploration license, that in lease, that is junior miners can participate in that, and also empaneled agencies for the exploration. पेट ही पतला होगा कुछ. So far around 14 empaneled agencies have participated, have empaneled, and through NMET fund we are providing the assistance and also providing them for the exploration. Lot of changes have been brought in so that private people can participate in the exploration also, and in deep-seated we are supporting from the NMET fund also, and they should also invest and go for the exploration. These are the few far-reaching changes we have brought in recent past, and by that I am confident, because as you know, gold is deep-seated and we have gold reserve, but we are not able to identify and explore it, because there are only 2-3 major agencies, 2 agencies, and some agencies, exploration agencies were in the state, and they were doing only this superficial mineral, limestone, such things. By bringing these major changes, now including potash, lithium and many other things, all these 24 minerals what have been identified, we have insisted both GSI and also we are trying to bring in junior miners by attractive terms and conditions. So with these things today, as I have already said, these critical minerals are in Chhattisgarh, पेट ही पतला होगा कुछ नहीं. दबा लो गरीब आदमी. वेरियस स्टेट का लिस्ट बाद में मैं आपको देता हूँ. तो वेरियस स्टेट्स एंड छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, Jharkhand, Gujarat, Bihar. These are the states where at present we are operating the critical minerals. 8 states. And as I already mentioned, both in Parliament and now in my speech, entire revenue
will be accrued in the state exchequer. We are only taking the responsibility of auctioning it, and entire revenue will go to the state government. This is from my side. Anything from your end? We are ready. The lithium is a दबा लो गरीब आदमी को कोई बात नहीं है। found in Jammu and Kashmir earlier this year. Yes, this is a part of this. JNK वाला भी है और एक है ना lithium. One lithium. Parameters for the very tender document is very specific and clear, and needs so Mr. Loya will explain. Now this is basically we have a concept called average sale price. Yes, sir. So whatever is the market value, what percentage of that market value the person who gets the company who gets the mineral concession is willing to give as revenue share to the state government. So that is the parameter. Whoever gives the highest revenue share, commits to give highest revenue share, they will be declared as the winner of the auction. One is royalty. We have already fixed royalty. We have brought it for the, as far as, if I can just quote the example of lithium, it is 1%. Remaining thing is premium, whatever he quotes, 3%. For lithium, it is 3%. And remaining premium, whatever he quotes, that is the basic criteria. Sir, Rakesh from New Indian Express. You said, sir, 100 blocks. So when are you planning to come up with the other? 20 तो हमने अभी किया है, बाकी तो ये ट्रांच होने के बाद, जब हमने पहले भी कोल का किया था, पहले 20-25 किया था, बाद में धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। तो अभी तो हमने 20 तो किया है। इसके लिए थोड़ा समय भी लगेगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एवर experiment, or what first ever the auction it is going on for the critical minerals. So as soon as 20th February को this process will come to an end, this present auction process, and after that we will take for the next tranche. Next. दबा लो गरीब आदमी को कोई बात नहीं है। हाँ, sorry, lithium का 2 ब्लॉक है. I am sorry for that. One is in Chhattisgarh and another one is JNK. सर तरुण फ्रॉम बिजनेस सर 2 सवाल है। पहला कि सर जो हम 20 ब्लॉक के बाद और जो आप 100 ब्लॉक बता रहे हैं, उससे क्या जो देश को क्रिटिकल मिनरल आत्मनिर्भर करने की जो बात है, उसमें कितनी सपोर्ट मिल पाएगी? कितना आपको लगता है कि इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा इस ऑप्शन के बाद? दूसरा सर कि स्टेट्स की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस इस पूरे मेथड में मिला? क्योंकि सर आफ्टर ऑल ये स्टेट्स का काम था, MMDR एक्ट अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल इसको अपने हाथ में ले। As far as Atmanirbhar is concerned, the whole intention is that only. तो हमारे देश में जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं, तो कोल भी हम बहुत बड़े मात्रा में इम्पोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यह है कि the substitutable, whatever is substitutable, whether it is coal or other minerals, we want to stop which is available in India. That we want to stop. That is the ultimate goal of and the purpose of all these exercise. And I am quite hopeful that since we have given task to our Government of India agencies like MECL and GSI, and also to the states also, and empaneled agency are also there, and junior minerals also, most attractive terms, junior miners को हमने आह्वान किया है. Through that we are going for that also, we are going for the tender process. So ultimately the aim is that only. And दबा लो गरीब आदमी को कोई बात नहीं है। what was your another question? States So I am quite hopeful now. I am always optimistic that ultimately it goes to the state. And exploration के लिए जो कुछ भी पैसा डाल रहे हैं वो एनमेट से हम ही डाल रहे हैं, और बाकी अगर वो भी करते हैं तो एनमेट से हम पैसा दे रहे हैं, बाद में रेवेन्यू भी उनको ही जाएगा। तो इसीलिए कोऑपरेट करते हैं तो देश के लिए भी अच्छा होगा,
स्टेट के लिए अच्छा होगा। और जो कुछ भी हम MMDR एक्ट में अमेंडमेंट वगैरह किया है ये तो सब स्टेट के साथ कंसर्न लोगों के साथ स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करके ही किया है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि वो हमें पूरे से पूरे सपोर्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली they are the beneficiaries. As you know, I have mentioned and Honorable Prime Minister has mentioned in one of his speech in the Parliament, while replying in the Rajya Sabha, how Odisha can change the entire their financial position, financial situation by this change of auction route, and from 5,000 in 13-14 to 50,000 in 21-22. And this is the things how they can also change it, and I am appealing the state to you also. You please cooperate, and ultimately it will add to your exchequer. Sir, is ECFC clearance already been... आपका नाम बताइए सर मैं बताया सर ये सर ECFC क्लियरेंस मिल गया क्या जिन ब्लॉक्स को आप ऑक्शन करें उनके लिए, या बाद में नॉर्म के अनुसार ECFC का whatever the norms has to follow all those environment and forest and other licenses. Normally for one mine to operate there will be 20-21 clearances. 26. 23 clearances. And all those 23 clearances we need to take, and out of that is EC and FC. And as per the norms, they have to apply. And we are also requesting, जब भी norm पे आएगा, तो जल्दी इसको dispose off करने का request किया है, क्योंकि ultimately it is in the interest of nation, and that department is also naturally working in the interest of nature and environment both. Sir, 23 clearances, so I did not hear 23 clearances which you said for one mine. 23. 23. It includes EC and FC. Yeah, it both includes EC and FC. Right. And as far as I remember, 10 or 11 from the center and the remaining are from the state. Correct, na? Sir, have these clearances been given for these blocks? No. Now, as soon as auction process is over, they have to do it. So that's what many times people question me, आपका सरकार आके 10 वर्ष हुआ कोल प्रोडक्शन क्यों नहीं शुरू हुआ है? तो ये कोई भी एक ब्लॉक, इधर इट इज कोल और अदर माइन शुरू होने के लिए 7-8 वर्ष लगता है. तो अभी इसीलिए in spite of this, the coal production in last 10 years it is almost doubled. This year we are going to cross 1 billion almost. So this is what the change, whatever has been brought. Otherwise we are in 400, 500. अगर आपका economic जो अभी growth हो रहा है उसके अनुसार देखते तो हम 500-600 million टन हमको import करना पड़ता था कोल, अगर production ठीक नहीं होता तो आज तो production बहुत बड़ी मात्रा में increase हुआ है. And last year it was almost 900 million ton, and this year we are going to cross nearly about 1 billion. So by that, whatever the growth rate के अनुसार जो भी import था उसमें बहुत कम हुआ. So इसी से related एक question हिमांशु from NDTV. Sorry. हिमांशु from NDTV. Yeah. इसी से related एक question था that there is an international agency, news agency, which is reporting that India is aiming to add 17 gigawatts of coal-based power generation capacity in next 16 months. How should we see this report, sir? No, that our energy with the sustainability, our energy security, we will that is our priority. But ultimately, my department is to produce the coal, and whatever new generation units are to be added, that is the report of the Power Ministry. Thank you. You want to add? ये अच्छे डिबेट होगा, स्ट्रक्चर डिबेट होगा, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगा, और जो कुछ भी वो चाहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार तो है ही है. और लेकिन मैं चाहता हूँ, ये तो लास्ट सेशन ऑफ दिस टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो मैं चाहता हूँ आप चर्चा करो, विमर्शा करो, जो कुछ भी हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में विमर्शा करो, मंथन करो, चिंतन करो. तो बाकी बिल तो आइडेंटिफाई, जो आइटम्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो 24 आइडेंटिफाई किया है,
तो 15 दिन का वर्किंग डेज है, तो सभी मिल के काम करते हैं तो हमारा बिल भी पारित होएगा और जो वो चर्चा चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। Going to conclude on 22nd. There are around 15 working days. 24 lists have been we have identified. Items have been identified, and as you all know well, the entire country knows well that this is the almost last session because another session is going to held only for the vote on account. This is the last session where there will be full-fledged discussion, and there are a lot of government business also. And I call upon for the structured debate, constructive debate, चिंतन मंथन जो हिंदी में बोलते हैं, that should happen, and government is open for any discussion. But everybody together, if you decide, both opposition and the ruling party, we are very open, and if together we can do this job, government business will be also over, and whatever they want discussion, that can also be. Thank you. And previously what used to happen, our two major agencies, one is GSI and another one is MECL, they used to go for superficial minerals like limestone, iron ore, bauxite, something like that. And by that, and that also they used to go up to G2 level, G1 level, which used to consume the time. And they never used to take up the exploration of these deep-seated or the critical minerals. Now we have told them to empanel the private agencies for the other minerals, superficial minerals, and also deep-seated if they want, we will support them through elements. By that, we want to give thrust on the deep-seated and critical minerals. That is happening, and the increase in the geological report is more than 111% because of this policy of Shri Modi government. And I am quite confident at least some of the critical minerals which are needed for the country's progress, we have already identified it, and JSI is also doing its work, and other junior miners provision also we have brought in the recent amendment, and I am confident that it will give a good result. सर, एक शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कल जो 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया उस पर क्या कहेंगे सर? ये तो भारत सरकार, उत्तराखंड के सरकार और मेनी एजेंसीज बहुत अच्छी ढंग से काम किया है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन इसमें तो और एक गर्व है, हमारा जो माइंस डिपार्टमेंट के जो मजदूर और एक्सपर्ट लोग हैं, माइन डिपार्टमेंट है, माइनर्स जो है माइनिंग फील्ड में जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके काम किया है, वो भी हमके लिए गर्व के बात है। हमारे लिस्ट में हमने आइटम्स आइडेंटिफाई किया है, बाकी अभी एक आध दिन में सब फाइनल करके हम रिपोर्ट रखेंगे, हम पूरा डिटेल रखेंगे ऑल पार्टी मीटिंग में भी। मैं चाहता हूँ पूरा कोऑपरेशन पोजीशन से कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, क्योंकि ये तो लास्ट सेशन है ऐसे इस टर्म का, और इसके पूरा कोऑपरेशन स्ट्रक्चर DuBord डिबेट कंस्ट्रक्टिव। सर, तेलंगाना में कल वोटिंग भी होनी है, क्या कहेंगे? तेलंगाना में तो वोटिंग तो होगा, और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी विल परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन तेलंगाना, एंड आई एम क्वाइट होपफुल। सर, राजस्थान में क्या? राजस्थान